Hi, I'm Sonia Luthra, an expert trainer for IELTS on Unacademy platform. And today's session is going to be about the listening module. In the previous YouTube session, I've talked about how did I score a perfect 9 in the reading module. If you have missed out on watching that video, please go ahead and watch it really soon, because a lot of you are still struggling with your reading module, right? So yeah, today is going to be a complete understanding of IELTS listening module, and I'll try to do justice to it. So let's quickly get started on understanding what the listening module looks like for IELTS and how it's done. So yeah, let's quickly get started. So when it comes to the listening module, there are going to be 4 sections. Like, the listening module is divided into 4 parts, and every single part have 10 questions each. The questions get more difficult as the test progresses, which means the section 1 being the easiest and section 4 being the toughest one. The test lasts for approximately 30 minutes and each recording is played only and only once. You do not have any control over the speed of the audio as well. You will have 10 minutes at the end of your test to answer the question, but that is only and only applicable to the paper-based test, not for the computer-based test. At the end of the computer-based test, like once the audio is played, you will get 2 to 3 minutes extra time to check your answers. But when it comes to the paper, paper-based exam, you will get 10 extra minutes. So this is what exactly on an overview your listening test looks like. You will have in total 40 questions. You will have in total 40 questions to solve in approximately 30 minutes, and plus you will get 10 minutes extra time to transfer your answers from question booklet to the OMR sheet. Okay, and that's only and only going to happen in the paper-based test. In computer-based test, I've told you, you're going to get 3 minutes extra, 2 to 3 minutes approximately extra. So there are 4 sections. These 40 questions are divided into 10 question per 10 question per, I would say 10 questions per section, and the question will get more difficult as the test progresses, and the test lasts for approximately 30 minutes. Each recording would only and only be played once, and you do not have any control over the test. So this is what exactly your listening test looks like. Now what exactly we are going to do here is we are going to understand each one of the sections in detail. If anybody has joined me live, could you please quickly say hi to me here? एक बार मुझे hi कह दो, so that I know that you people are here. Okay, so yeah. Let's jump on to the understanding of every section individually. Like here I have an overview, but I'm gonna get into more detail while trying to explain you all the parts individually. So your part number 1 is basically a conversation between 2 people within a social or everyday context, which means it's generally a telephonic conversation wherein a person is calling another person to book an appointment for a doctor's visit, or maybe to inquire about a holiday, or to book a hotel room. So it's going to be, the part 1 is going to have a conversation between 2 people, mostly a telephonic conversation which involves a social or everyday context. When it comes to a
section second, there would be one person speaking in a social or everyday context, facilitating a group of people. When it comes to the section 3, a conversation between two or more people within an education context is what you are going to expect, or which you can expect here. Section 4, it's going to be a lecture normally on an academic subject. We are going to get into explaining. I'm going to get into explaining each one of these parts or section in more detail one by one individually. Let's go. So let's get started. So when it comes to the part 1, number of speakers will be 2. There will be 2 speakers, right? And the context is going to be social, which means day-to-day conversation, and mostly it's a telephonic conversation. Okay, mostly it's a telephonic conversation. And the type of questions that you can expect here, are going to be note completion or form completion. So please, I'm giving you, some time to, look at this particular slide, have a look, soak in, and let me know if you have any doubt. I'm going to show you the question types as well. So part 1 में basically होगा क्या? 2 speakers होंगे, कॉन्टेक्स्ट सोशल होगा, मतलब डे टू डे लाइफ की जो बातें होती हैं वो बातें होंगी. मोस्टली आई टोल्ड यू टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन होगा, जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को कॉल कर रहा होगा, ईदर टू बुक डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, या फिर उनको कुछ इंक्वायरी करनी है किसी होटल के बारे में, या होटल रूम बुक करना है, या किसी हॉलिडे डेस्टिनेशन के बारे में कोई इंक्वायरी है, एनीथिंग. बट इट्स मोस्टली अ टेलीफोनिक व्हिच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वॉल्व होती हैं. पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि क्या? नेम ऑफ अ पर्सन, टेलीफोन नंबर ऑफ द पर्सन, राइट, एज ऑफ अ पर्सन, might be address of the person, right, and timings are involved, right. तो इस तरीके की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी when it comes to the part 1 as an answer. तो मैं अभी आपको जो है क्वेश्चंस दिखा देती हूँ. लेट मी शो यू द क्वेश्चन, हाउ एग्जैक्टली द क्वेश्चन लुक्स लाइक. जनरली आपके पार्ट 1 में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने स्पेसिफिकली बताया है, नोट कंप्लीशन और फॉर्म कंप्लीशन. सो इट लुक्स लाइक दिस. Here you have a form, entire form, and like under the form you have fill-ups. So you have to basically answer these questions in one word, slash and slash, or a number. So it can have a combination of a word and a number. It can also take a single number or a single word as an answer. So please have a look at, this is what your part 1 looks like generally in your IELTS exam, and this is fixed. ये फिक्स है that in part 1 there will be 2 speakers, and जो बातें होंगी वो सोशल कॉन्टेक्स्ट पर ही होंगी. एंड जो आपका क्वेश्चन है वो जनरली 99% जो है, देखो ये दोनों नंबर ऑफ स्पीकर्स एंड द कॉन्टेक्स्ट इज लाइक कंप्लीटली फिक्स्ड, बट जो क्वेश्चन टाइप है 99% आपका फिल इन द ब्लैंक ही आएगा, नोट कंप्लीशन ही आएगा. ठीक है, बट यस देयर इज स्लाइटली 1% ऑफ 1% का जो है वो अभी भी आपका एक डिफरेंस है यहाँ पे, जो आप देख सकते हो कि शायद कोई और क्वेश्चन टाइप आ जाए, बट आता नहीं है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर योर पार्ट 1. So let's now move on to the part 2. As I told you, part 1 का जो part 2 का जो context है वो भी social होगा, like day to day conversation basis पे ही होगा. But here it's gonna be a monologue, which means a single person, a single speaker would be speaking. एक single person जो है वो यहाँ पे बातें कर रहा होगा. Basically a person facilitating a group. Let's say I am the owner of a resort and I have invited few guests after renovating my resort. So I'm basically going to facilitate or address the entire group of my guests, explaining them where everything is. So this type of part generally includes a map as a question, जहाँ पे आपको directions दी जाएंगी कि resort के center से if you take a left there is a pool, if you go straight from the center there is a gaming arena.
So that is how your question is gonna look like. And यहाँ पे multiple choice question भी आते हैं, wherein there is a question statement and 3 options are given to you, and you basically have to choose one out of them, one correct options out of given 3. So I'm giving you some time to look at the part 2 and soak on it. Let me know if you have any doubt. If you don't have any doubt, I'm gonna go quickly show you the questions. ठीक है? Sample questions हम कुछ देखेंगे. So it's like today's session is all about explaining what your listening exam looks like. If you literally want to know more about it, there are a lot of courses that I just have finished a proper fully fledged listening course this month on our website, on our platform, Unacademy's platform. You can definitely go ahead and join it, and how you can join it I'm going to talk about that later on at the end of the session. So please stay tuned till the end of the session. This is how your multiple choice question looks like. Some of them have a full sentence as the option. Few of them have few words, or I would say a single word as an option. Then this is a different type of multiple choice question, where instead of 3 options you have like 5 to 6 options, a list of options, and you have to select, instead of 1 correct answer, 2 or 3 answers. Okay, so these are like 2 different type of MCQ questions, and I wanted to show you both. That is why I've picked this particular test. So this is what your MCQ question looks like, right? And this is what your map look like. Here you have like 3 questions, 1, 2 and 3 fill-ups, which you basically want to answer. So basically आपको इसमें एक speaker होगा जो आपको direction देगा. So it clearly says you are here at the tower. So from tower, taking tower as a reference, your speaker is going to help you navigate to a certain point, and then you will have to tell basically ये 17th क्या है, 16th क्या है, 15th है क्या. So this is what your map looks like, and of course I told you that यहाँ पे एक single person होगा जो बाकी group of people को facilitate कर रहा होगा और बता रहा होगा, नेविगेट करवा रहा होगा कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ है, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है. ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट योर स्पीकर इज टॉकिंग एंड हेल्पिंग यू नेविगेट, आपको उसके बेसिस पे है जो अपना आंसर फाइंड करना है. So let's move on to the part 3rd now. So in the part 3, there would be more than 2 speakers for sure. It can be like 3 or 5 speakers, right? 3 to 5 speakers can be there. And context. Now the context is going to be changed. अब जो है context आपका बिल्कुल change हो जाएगा. अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में द कॉन्टेक्स्ट वाज सोशल, लाइक अगर आप कहीं मार्केट प्लेस पे जा रहे हो या फिर डे टू डे लाइफ में आप किसी पर्सन से कैसे मीट एंड ग्रीट करोगे, दैट वाज अबाउट दैट. बट व्हेन इट कम्स टू द पार्ट 3 एंड पार्ट 4, the context is going to be academic, wherein the conversation is set in a formal tone in an environment where like for university or like ऐसी जगह जहाँ पे कुछ पढ़ाई होती हो, है ना. So यहाँ पे number of speakers are definitely going to be more than 2. It could be 3 to 5. Like 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं. Context I've already told you academic. Generally यहाँ पे होगा क्या? A group of student discussing either among themselves or with their professor. मतलब एक group of people होगा. Please ignore the typo. I know यहाँ पे discussing होना चाहिए था and themselves में M missing है. I'm really very sorry for that. I'm gonna fix it right after the class. I think it's my team who has have created these PPT for me, and definitely एक मिस हो गया है टाइपो, and I'm really very sorry for that. Yeah. So यहाँ पे जनरली होता क्या है, a group of student either they are discussing among themselves about their upcoming project and the
subject they want to choose or the topic they want to take for their project, right? Or else they are discussing it with their professor. Generally the question type that comes here are like MCQ and match the information. आज ही हमने मैच द इंफॉर्मेशन किया है मेरी रेगुलर लिसनिंग क्लास में. अगर आपने मिस करा है, इफ यू आर अ सब्सक्राइबर प्लस और आइकॉनिक डजंट मैटर, यू कैन गो वॉच द रिकॉर्डेड सेशन. बट इफ यू आर नॉट, आई वुड टॉक अबाउट प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस इन अ व्हाइल. ठीक है. सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे. दीज आर लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद अ लेंथी सेंटेंस as an option, and this is like a matching information wherein there are some opinions given to you and modules are given to you. Then there you have to match these certain modules को आपको opinion के साथ जो है वो match करना है. ठीक है. This is how your part 3 looks like in actual exam. Now we have part 4. So part 4 is definitely part 4 is again a monologue wherein a single speaker will be speaking, and this particular person would be either a professor or a researcher or a scientist, and again the context is going to be academic. यहाँ पे क्या होगा basically, जो researcher है, जो professor है या scientist है, वो एक speech दे रहे होंगे अपने किसी latest finding या किसी research topic. It's basically a lecture wherein a professor is talking about a topic, right? And the question is going to come as note completion, मतलब fill in the blank आएगा. This is how it looks like. Labyrinth is a topic on which a lecturer is there or professor is there and talking about this particular topic. ठीक है. यहाँ पे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आएंगे जिसके बारे में हो सकता है हमने कभी सुना ना हो, but doesn't matter. All you have to do is listen and write your answers, right? So yeah, this is what your listening test on the whole look like. I have talked about every single part one by one, and I've tried explaining you every part individually in detail, that this is the type of questions that you can expect. This is the question, this is how your examination will look like, and this is kind of fixed. ये fix ही रहता है आपके IELTS exam में, right? So yeah, this was all about today's session. I know today's session was like quite short and very sweet, very short. And if you want to attend a lot of such like if you're looking for a lot of such free content, all you have to do is either download our Unacademy's learner app from your Apple Store or Play Store, or you can directly log into our website as well. If you're somebody new, all you have to do is just just log in with your phone number and an OTP and select your goal as IELTS. Once you've selected your goal as IELTS, since you already know my name, Sonia Luthra, go to my profile and look for the special classes. Those special classes are absolutely free, right? But if you're somebody who doesn't only want to watch special classes but also want to be part of the regular classes, the plus classes, this is the course that we are going to start from, like, actually I didn't want to हमारा जो कोर्स है वो जल्दी हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है. ये वाला जो कोर्स है, this was the course which actually ended today. Basically this was the course which ended today only, right? But there is a new course which is going to start from 4th of February. एक और कोर्स है जो आपका 4th of February को स्टार्ट होगा. Definitely you have missed this course. Today was the last day for this course, but you can definitely look forward for the 4th February course, जहाँ पे I am going to take care of your writing module. मैं पूरा का पूरा आपको जो है राइटिंग कराऊंगी. जनरल ट्रेनिंग प्लस एकेडमिक, टास्क 1 प्लस टास्क 2 दोनों ही यहाँ पे कंप्लीट होगा. द टाइमिंग इज गोना बी 7:30 PM. ठीक है, यही टाइम रहेगा जो मेरा है ना, 7:30 PM ही रहेगा. बस 4th of February से वो कोर्स राइटिंग का स्टार्ट होगा. गरिमा मैम का टाइमिंग भी 11 AM रहेगा, बट मैम यहाँ पे आपको रीडिंग कराएंगे. एंड रिमेनिंग 2 जहाँ पे लिसनिंग और जो है लिसनिंग और जो रीडिंग है वो आपको यहाँ पे गरिमा मैम कराएंगी. ठीक है, और ये गरिमा मैम का टाइमिंग होता है 8:45 PM इन द नाइट, मंडे टू सैटरडे. ठीक है, सो ये आपके क्लासेस टाइमिंग है. जो 4th of February के बैच है, मैंने फिर से मैं बता देती हूँ, जो 4th of February का बैच है उसमें सोनिया मैम विच मीन्स मी, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर राइटिंग मॉड्यूल. 7:30 से मेरा क्लास होता है PM मंडे टू सैटरडे. स्वयं मैम जो है, मैं सिर्फ स्वयं प्रभा मैम लिख रही हूँ, SP मैम,
कॉलिंग यूजिंग इट अ शॉर्टकट। स्वयं प्रभा मैम जो है वो आपको रीडिंग कराएंगे एंड रीडिंग कराने का उनका टाइमिंग रहेगा 11 AM, ठीक है, 1 आवर का क्लास रहेगा। एंड गरिमा मैम जो है वो आपको कराएंगी लिसनिंग प्लस स्पीकिंग एंड उनका टाइम रहता है 8:45 PM, ये AM है। सिर्फ स्वयं मैम जो है वो मॉर्निंग में क्लास लेती हैं, मैं और गरिमा मैम जो है वो इवनिंग में क्लास लेंगी। एवरी सिंगल क्लास इज ऑफ 1 आवर ईच, सो प्लीज कंसिडर ज्वाइनिंग दिस बैच, है ना। ये वाला बैच आप लोग डेफिनेटली जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर समबडी हु इज प्लानिंग टू टेक लाइव। ये कोर्स डेफिनेटली एक प्रीमियम कोर्स है, सो यू विल हैव टू बाय अ सब्सक्रिप्शन बिफोर यू एनरोल योरसेल्फ फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। इफ यू ऑलरेडी हैव एन एक्टिव सब्सक्रिप्शन विद अस, doesn't matter iconic or plus, if it's an active subscription, all you have to do is go to my profile, look for the upcoming course, because the course is already live, you have to click on enrolling it, ठीक है, आपको बस उसको enroll करना है ना। But if you do not have an active subscription with us, firstly you have to go buy the subscription and then only you can go ahead and enroll for the courses. We have two type of subscriptions, one is plus, another one is iconic. पहले मैं plus और iconic का difference बता देती हूँ। जो plus है, plus में you'll have structured courses, there will be daily live classes, I've told you, Monday to Saturday except Sunday. You can interact with the educator in the class itself. The full syllabus will be covered and you will have access to the curated test series and there will be practice question bank available for you. But when it comes to iconic, everything is included and there are 3 extra things that you can get with iconic subscription. That is, you can book a 10-minute, 20-minute or a 30-minute one-on-one session with your mentor. You will have a dedicated mentor to yourself with whom you can discuss your doubts. You can get your speaking evaluated or your writing evaluated for that matter by selecting a 10, 20 or a 30-minute of slot with your mentor. Secondly, you will be given a priority in the class. Let's say if there are 50 students in my class and you are an iconic student, if you want to ask me something, you'll be prioritized. If I'm taking speaking, you raise your hand, I'm gonna give you a priority over other students, ठीक है। एंड डेफिनेटली एक और चीज जो है वो यहाँ पे ये है दैट यू आर गोइंग टू गेट सम एडिशनल फिजिकल नोट्स, द नोट्स विच प्लस स्टूडेंट्स आर गोना गेट। डेफिनेटली उसके अलावा आपको इनको तो सब ऑनलाइन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपको भी जो मैं ऑनलाइन स्टडी मटेरियल दूंगी वो दूंगी, बट इस ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के अलावा यू विल गेट सम फिजिकल नोट्स डायरेक्टली फ्रॉम द कैम्ब्रिज। आपको कैम्ब्रिज कुछ बुक्स भेजेगा प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा दैट यू गेट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसीलिए जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू द प्लस, बट इन जनरल वो एक्सपेंसिव नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूं प्लस और आइकॉनिक को, थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्योंकि वन ऑन वन मेंटोर है, राइट। बट मार्केट प्राइस से अगर मैं कंपेयर करूं तो चाहे आप आइकॉनिक ले लो चाहे आप प्लस ले लो, डजंट मैटर, दोनों ही बहुत रीजनेबल प्राइस है। वी ओनली हैव अ 1 month और अ 3 month कोर्स। मैं आपको इसका रीजन भी बता देती हूँ कि क्यों ये डिजाइन किया गया है। 2 months में किसी की भी प्रिपरेशन पूरी नहीं होती है। 1 month जो है वो उन लोगों के लिए है जिनको एक क्रैश कोर्स चाहिए, जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ले रखी है कहीं से, दे हैव फिल्ड देयर एग्जाम एंड दे जस्ट वांट अ क्रैश कोर्स, ठीक है। तो 1 month उनके लिए है एंड 3 month प्रॉपरली उनके लिए है जिन्होंने बिगिनिंग से लेके एंड तक फ्रॉम अ स्क्रैच दे वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, right? So, you know, 1 month subscription will cater to somebody who has booked her or his exam in like next 15-20 days or maybe in a month of time, or he or she just has, you know, some self doubts. उनको अभी भी सेल्फ डाउट हो रहा है, एग्जाम तो फिल कर दिया बट सेल्फ डाउट हो रहा है कि नहीं यार अभी भी कुछ छूट रहा है, तो उसके लिए है ये। बट अगर आपको लग रहा है कि आपने कभी प्रॉपर ट्रेनिंग ली नहीं है, और अगर ली भी है बट बहुत पहले ली है, और मे बी ली है आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपनी जो प्रेपरेशन है वो प्रॉपरली फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करना चाहते हो, देन अ 3 month कोर्सेज फॉर यू। अब जो मैंने बताया, देखो आइकॉनिक जहां पे आपको ये 3 चीजें एक्स्ट्रा मिल रही थी, वहां पे आपको 1 month का पे करना पड़ेगा 2,999 रुपीज ओनली। अगर आप 3 months के लिए एनरोल करते हो तो द टोटल अमाउंट दैट यू हैव टू पे इज 3,999, राइट।
अगर आप प्लस के लिए जाते हो जहां पे ये तीनों चीजें इंक्लूडेड नहीं है, 1 मंथ के लिए ऑल यू हैव टू पे इज ₹999 एंड अगर आप 3 मंथ्स के लिए जाते हो तो यू विल हैव टू पे 2499। अब आप इस पे जो है जो प्राइजेस मैंने बताए, यू कैन अवेल अ 10% डिस्काउंट यूजिंग दिस कोड SONIA10 फॉर टुनाइट ओनली, लाइक 12 AM तक, आज मिडनाइट तक। अगर आप ये वाला जो कोड है यूज करोगे तो इंस्टेड ऑफ 10% आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा ऑन द प्राइजेस दैट आई जस्ट टोल्ड यू। ये जो प्राइजेस आपको दिख रहे हैं, अगर आप ये कोड मेरा यूज कर लेते हो सोनिया10 तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। बट ये 20% डिस्काउंट सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही एप्लीकेबल है। उसके बाद अगर आप बाय करोगे तो आपको जनरली 10% ही डिस्काउंट मिलेगा। So what are you waiting for? Please quickly go ahead and subscribe to either Plus or Iconic depending upon what you want and like what you are convenient for. What is convenient for you? ठीक, फटाफट जाओ एंड बाय कर लो बिकॉज ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। ठीक है, तो this is our like official Telegram channel. You can definitely join it to keep to get the updates regarding what is happening around Unacademy or what is happening around IELTS Unacademy especially. Yeah, so that was all about that. ये कोड याद से यूज करना, it is in capital SONIA10 in caps आपको ये यूज करना है। चाहे आप आइकॉनिक लो चाहे प्लस लो, चूज वाइजली 1 मंथ या 3 मंथ, जो भी आपको लगता है आपके लिए बेटर ऑप्शन है। मैंने बता दिया 1 मंथ किसके लिए है, 3 मंथ किसके लिए है। Choose wisely and start your preparation with us. And if you are somebody new to channel, you haven't subscribed the channel yet, please subscribe and do not forget to press the bell icon so that you do not miss out on any new video coming on our channel. And of course, if you like this video, please like it and share it with your friends, and do leave a comment below if you have any doubts. Okay, so yeah, that was all for today's session. Looking forward to see you all in my upcoming batch for the writing classes. Go quickly subscribe to Unacademy, either for Iconic or Plus till midnight, as you are getting 20% discount, which does not happen very often. So yeah, please grab this opportunity and I'll see you there in my regular courses. Till then, please bye bye, take care, and let's crack it together.